Hello, good morning, everyone. How are you all? Good Good morning. morning. Good morning, ma'am. How are you? I'm good. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Very good morning. So, क्या चल रहा है? How's life? Yes, बताओ. I'll question As speaking always, preparation, similar. ma'am. One by one. ऐसे तो मुझे किसी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा. Ma'am, practice of the IELTS, all modules like this listening, speaking, अगर and मुझे reading. fluent answer चाहिए हो आपसे, then how will you speak? How's life? Yes, Jyoti. First you. Yes. Sorry, ma'am. Can you repeat again? My question is, how's life? How's your life going? My चलो life बताओ. is going on a very fantastic way. I'm I'm doing speaking practice regularly. Okay. Anybody else? Good. Life is going quite well these days. I am focusing on IELTS practice Mm-hmm. more Mm-hmm. so that I can crack my IELTS exam Mm-hmm. with the good band score. Mm-hmm. Some days I am busy, some days are calm and easily manageable with the work and study. Well planned. Wow, you're able to extend your ideas, Vishali. That's great. Okay, what about others? कैसी Yes, चल ma'am. रही है life? Yes. Life is going well, but in these days, due to the harsh weather, Mm-hmm. uh, practice and other tasks has become difficult, especially here in Karachi. Mm-hmm. Temperature is temperature is up. Temperature is raising up to 50 sometime. Mm-hmm. So you are from Yeah. Karachi. Yes, Karachi, Pakistan. Oh, okay. What about other? How's life? Yes, Gaurav. Gaurav, can you answer? How's life? Anyone who would like to answer? How's life going? Miss, can I Yes, answer? Yan. Uh, uh, Tell about myself. I'm 16 years old. I'm from Kazakhstan, so I try to learn English by myself without school. So uh, I will take a IELTS exam in August. So I'm preparing for this. Mm-hmm. It's all. Okay, that's great. So, Ayan, you're new to our sessions, right? Since how Uh, long you are using the application? uh, 4 months maybe. 4 months. So, did you But it's try my first time at lesson. It's my first time. for classes? I know, Yeah, first but time. I'm asking about the application. It's been 4 months you are using this application, right? Yes. Did you tried any speaking test? Speaking test, yes, I have tried, but Okay. my school subject is so hard, so I can't try every day the speaking, listening, other. That's really okay, but I really want to know about your speaking test scores. If you tried any Mm, speaking test, how was your score? really, miss, I don't know. Maybe after the lesson, I will tell you if I check it. Yes, please. Definitely. Whenever you came across any speaking test, please Mm-hmm. check your score. Okay? Okay. No worries. Okay, Ma'am, so I if ma'am, yes. I gave one test yesterday in the application, Mm-hmm. speaking. So I got the 7, ma'am. Wow, wonderful, Jyoti. So you saw an Thank you, improvement ma'am. in your answers. Yes, ma'am. Earlier it was not 7, right? Actually, ma'am. Yes. It's Now 6.5. that's what I said. Gradually, with the consistent practice, you will definitely see yourself the changes in your band score. So Actually, ma'am, today's session, in yes, please. the classes, I'm not that uh, interact with you because I am in office at the time. So that's difficult for me every time to answer you. Okay, no problem. That's really okay.
But Ma'am, please, I have whenever you get a chance, you need to speak. Okay? okay. Sure, ma'am. Ma'am, I I will have a try. question. Yes, please. Ma'am, if someone get 7.5 on application, Hmm. uh, Yes, he and she will, yeah. hmm. So then by actual when they take actual exam, they will get the same band score. Because, yes, We Ruxana, can let rely me on explain it. this thing. Now, suppose Jyoti was getting 6, 6.5. Now, in the one test, she got 7. But Okay, in the upcoming test, also, she needs to have that 7. okay, Sometimes it depends on the topic also that you're able to expand your ideas. But sure. Exactly. application, it always gives you the estimated band score. If you're Okay, consistently getting 7, 7.5, then your estimated band in the exam will be 7 and 7.5 only. okay, That's why I told you you can try the speaking test with an examiner in the application. You will okay. always get the entire feedback of your speaking test. जैसे AI आपको feedback देता है, उससे भी in detail आपकी feedback होती है जब आप examiner के साथ speaking test देते हो. And it's Yes, like ma'am. real one on one. जैसे एग्जाम होगा वैसा ही सेम आपका यहाँ पर स्पीकिंग टेस्ट होगा. Okay, okay, ma'am. Okay? Eventually, Yes. So you will get I an able estimated to band. purchase my membership yesterday. Oh, wow then. Yeah, Will be I able was to. trying since a month. Sorry? I was trying since months, Mm-hmm. but I failed many times Mm-hmm. to purchase. But yesterday, when I submit fee, Mm-hmm. it was successful. Yeah. You need to try some MasterCard, no? And you need to Yes, have that yeah, international card wala option on, like, right? yeah, Only then you can. yes, 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 yeah. If So your I asked my international payments are active, only then you can do it. yes, I asked someone Hmm. uh, who has credit card because Yes. I don't have credit card. I have only Visa card that is Okay. locally applicable. Huh. You need to make your international payments active so that you will be able to do. Okay. So if Jyoti is getting 7, so definitely if she tries the another test and she performs in the same way, she will get 7 again. And if the score is consistent, 7, definitely in the exam, she will have a band score of 7. Okay. Okay, okay. So please practice. If you keep on practicing, you will see a change. Right? So, aaj ka session, what's the goal of today's session is again that you will not Excuse me, ma'am. speak about the short answer, you will avoid the short answers and you will be able to expand your ideas naturally. This session is basically for those students जो हमेशा बोलते हैं ना मैम 6 से ऊपर स्कोर आ ही नहीं पा रहा. It's been 15 days I'm practicing. It's been 1 month I'm practicing, but मेरे को speaking part 3 में answers देना आ ही नहीं रहा. हाउ टू जनरेट आइडियाज इन पार्ट 3, कैसे एक्सटेंड करूं अपने आइडियाज को, समझ ही नहीं आता. सो दिस सेशन इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स. ये सेशन 7+ वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बिकॉज दे नो द स्ट्रक्चर कि हमें आइडियाज को डेवलप क्या करना है. बिकॉज येस्टरडे ऑल्सो व्हेन आई वाज टेकिंग अ स्पीकिंग टेस्ट, द स्टूडेंट वाज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग मी मैम पार्ट 3 बिल्कुल नहीं हो पाता. And in the speaking test also she got the overall band 6, but the target was 6.5 and 7. So why I schedule this class is so that they can extend their ideas. और वो ideas कैसे होंगे? Just with that one structure. कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोलना है, just plan this structure, keep in mind and speak about your ideas. आपके आइडियाज अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे इन द पार्ट 3. दैट्स माय Okay. प्रॉमिस एंड दैट इज टेस्टेड ऑल्सो. बट रिमेंबर दैट यू हैव टू स्पीक. क्वालिटी बोलो, क्वांटिटी मत बोलो. सम स्टूडेंट्स इन लाइक इन ऑर्डर टू जनरेट द आइडियाज कि मुझे 4-5 सेंटेंस बोलने हैं, वो कुछ भी बोलते जाते हैं. ऐसा नहीं. राइट? यू हैव टू Okay. स्पीक क्वालिटी.
जो भी बोलना है, you need to answer what the question demands from you. टॉपिक क्या है क्वेश्चन का, वो आपको बोलना है। ये नहीं कि आपने टेक्नोलॉजी सुना और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी बोल दिया, एडुकेशन सुना, एडुकेशन से रिलेटेड कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता। राइट? आज हम अपना बिगेस्ट बैंड किलर जो है ना, स्पीकिंग पार्ट 3, उसके लिए दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर दो स्टूडेंट जिनका स्कोर, it's been 15 days, they are giving the test and they are not able to increase the band score. Yes, Ikra, now please tell me what's your doubt. Ma'am, please guide me how to book speaking test with teacher because tomorrow I try but मुझसे हुआ नहीं था. Ikra, where are you from? I am from Pakistan. You are from Pakistan. Do you have your card details? Like which type of card do you have? Sorry ma'am, मुझे याद नहीं एक्चुअली भाई का है तो इस वजह. So please ask about the details, like which type of Okay. card you have. It's a credit card or Visa card, what card you have. Okay. The way you did your subscription ka payment, the same way you have to make the payment for your speaking test. Okay ma'am. Okay? By the end Okay. of the session, I'll help you out that where you need to locate in the shop section. Okay? Okay ma'am. Okay ma'am. Okay. Yes. Thank you. Okay. Anyone? Any other query? Or Yes, let's ma'am. start. Yes, please. Yes, ma'am. We can buy 2 and 3 tests together because it is difficult for me to To ask, make the payment. ask Yes, someone yes. You again need and to again. check. You need to check once about this. Okay. Gurpreet, is Gurpreet here? I think he is here. Gurpreet, you have a test today with me, right? So the ones who has done the payment, please ask them. Okay. Gurpreet, what you can do is, Ruxana, see that 99 rupees which is charged for the test, it's one-time payment. But Yeah. like you can do it multiple times. Yeah. ठीक है, तो एक बार करो book, then you can do it again and then do it one more time. ठीक है? But I would suggest not on the same day, just have a gap of 2-3 days. Like suppose if you want to book it for Friday, then Okay. have at least 2 days practice, then do it for Monday so that you can see the change. Okay. Okay, so book for some alternate days, not regularly, I would say. No, It's not advised. no, my question was not that. Hmm. I'm saying that I can book 2 to 3 tests. Means I can make payment 3 to 4 tests Yes, at but you one. have to do it every time. You have to make the payment every time. Yeah. Okay. Yes. So suppose one time you make a payment, 99 will be deducted. Second time again you have to book the test, then 99 will be deducted. Okay. Sitting at once, making the payment thrice for 3 tests. You Yeah. cannot say that 300 will be deducted at once. That is not possible. Okay. 99, then 99, then 99. Okay? Because it will Okay. take one test for that. Okay? Okay. Still, if you face any problem while making the payment, take a screenshot and submit to the support section. Okay. Sarjeet, Yes, Ma'am, hi, I good want morning. to ask a question. just wait. Sarjeet, Yes, are you able to book your slot for the speaking test? no, I actually sent that screenshot to sport team, and then they replied and they were saying that we will check this, but after that, like just it started, right? So maybe they'll reply today. Okay, because it's only with you that the problem we are facing. Otherwise, Yeah. I was having 2 tests. The same student who gave the test, she has the Mhm. test today also, and then tomorrow also. She was able to make payments for 3 tests. And she was also from like, I guess Dubai or Canada, maybe some country. Okay, I don't know. I sent that screen recording as Please well. wait for the reply. They will check Yes. your account details and everything na, on the Mm-hmm. application. That maybe your account will have some glitch. That's why you're not able Yeah, to book maybe. it. Because if the payment is done, you will be able to book your slot.
Yeah. Okay, and you are I actually want, taking the payment on writing test as well. So maybe there's yeah, no case for speaking. Yeah. I'm doing writing as well. Hmm. One more question. So I was trying to send the writings today. Hmm. But I don't know, maybe because of internet issue or something like that. I will try on my work Mm-hmm. again. Mm-hmm. So like it wasn't like giving me access to submit it. It was showing that file can't be uploaded Oh. because of some issues. I'm not sure like whether it is internet or something else. Mm-hmm. Yeah, You tried. Let me just check. No, abhi to I do not got yours yeah. because if any student try to do it, but the payment issue or something is there. No, I did not got any writing ka Mm-hmm. pending from you. Yeah, Maybe maybe because of because of internet issue. yes. So is it possible, like instead of writing on paper, Hmm. can I write on like computer? Because I'm planning to give computer test. So is it okay, But the like if thing I'll is, if you write on computer, there's no problem. But eventually, you have to take a screenshot of that and then you need to upload it. okay, so Because how this you is will possible, upload the right? image, or either you can upload because there's an option of only PDF or image, right? When Yeah. you upload, so you can do it Okay. right So over yeah, there. I'll. Mm-hmm. Write in a Word doc, whichever document you feel comfortable with. Just write over there and upload it. Okay. Yeah, this is I think better way because like when I'm writing with pen and I planning to cut it or something, change it, I got then I have to cut it out. Yeah. Yeah, it needs corrections, no? No problem. If you're Yeah. planning for CBT, then only try with the CBT method. Do not go for paper based. Okay. Okay. Now, as you all know, that speaking part 3 is a discussion based round. यहाँ पे examiner आपसे आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछता. यहाँ पर it's all about the society, the people, the trends, the reason, the effects, the future. पार्ट 3 चेक करता है कि आप सोचते कैसे हो, एक्सप्लेन कैसे करते हो, अपने आइडियाज को कैसे कनेक्ट करते हो. यहाँ पे कोई आपके वन वर्ड आंसर्स चेक नहीं होते, कोई मेमोराइज लाइंस नहीं चेक होती. Now I want all of you to give me answer for this question. Do you think education should be free? Then I'll give you that basic golden structure which you can apply only for the students who are stuck on band 6, not for the students who has achieved band 7. Tell me. Yes, sir. Yes, ma'am. Sir, who raised the hand first? Sarjeet. Yes. Yes. Hmm. Yes, I believe education should be free because it really helps a person to grow personally and professionally. If in the society education would be free, then there is a chances that the country will grow as person can grow up, as person can earn when he as person can grow when he learn about something. Moreover, with the awareness, society will grow as well because a person, I don't know. Sorry. Because हो गया थोड़ा सा. Okay. Just take a deep breath. Yes, Vishali. Can I try, ma'am? You need to raise hand, Anam. There are people in queue, please. Yes, Vishali. Yes, ma'am. So, I believe the education should be okay. I'm Hmm. really sorry. Yes, I believe education should be free for the student. It is because it gives everyone an equal opportunity to learn and build their better future. However, government should plan accordingly so that they can provide a free educations for the pupil, as well as they can provide the good opportunity for the student what is required for their better future. Acha, anyone, while giving the answer, can you apply any of the idioms which we practice? Mhm. Because I really want you to keep these things in practice. Mhm. It's not the session that is ended and you're not going to just practice anymore. I Who's think education yes, I Anam. think education should be free
because a lot of the students cannot afford tuition fee easily. Then the good step will be in blessing of disguise for those students who not afford their tuition fee, so everyone can easily get education on a free of cost. सो एजुकेशन, लेकिन इसमें आइडियाज अंडर डेवलप है अनम। क्या आपको पार्ट 3 में सिर्फ इतना ही बोलना है? The children get stuck in the race of poverty. Free education can be the blessing in disguise of them. You already spoke about this point. It gives them everyone to an equal chance. Okay. Yes, Ruxana. Yes, ma'am. In my perspective, primary education should be free for everyone, so anyone can get chance to get education and develop their careers. It's okay if government take some fee for higher education, because uh, till because people can earn after getting primary education, so they can afford their university fee mostly. But primary education must be free for everyone if we want grow if we want develop our country. If we want develop country, why Yeah. we want? I told you हम we word use नहीं करेंगे because Sorry, ma'am. part Mostly I 3 thought. is not about us. Yes, It's yes, about ma'am. yes, Saruchi, please go ahead. Saruchi, please speak, unmute and speak. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. I think education should be free because it gives equal opportunity to all the children who are actually brilliant and they want to learn something. For example, there are many children who can actually do something, but they do not get chance. That's it. आपकी intonation last में ऐसी लग रही थी that you want to continue, you want to speak, but you stop. Yes. Yeah. So that's what you need not to do in exam. ठीक है, वो रॉन्ग इंटोनेशन काउंट हो जाती है, तो प्रोनाउंसिएशन का जो पैरामीटर है उसमें आपका बैंड स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। यस सरबजीत। Yes, I'll try it again. हम्म Yes, I believe education should be free because it gives them equal opportunity to grow personally and professionally, especially for those who belong to underprivileged community. Moreover, with the help of education, they can aware themselves, which overall raise the standards of a society as well. For example, if there are people who are educated about the importance of environment, they can give better contribution to improve it. So that's why I think education should be free among every age of people. लास्ट में लेकिन आपको दोबारा से ये बोलने की नीड नहीं है, दैट इज वाई। Okay. ठीक है, तो वो एक Okay. समराइज वर्जन हो जाता है। यस एजे। So how to end this? Like, is it okay if I I will just explain. I will explain this answer. Just wait for others to reply. Yes, AJ. Well, education is the backbone of the human being. I believe that the education should be free for everyone because education is free for the right for every person. So I think the education is not only for the enhance the knowledge, but also it helps to the make opportunities in business as well as in popular companies. For example, if sorry, ma'am. It's okay, no problem. So that is why I want to give you a structure, because right now I know that there are some students who are struggling with only band 6, जो 6.5 पे भी reach नहीं कर पा रहे हैं। There are changes, जिन्होंने last course भी attend करा था, अभी भी कर रहे हैं, they have improved to 7, but some students are still on 6. तो उनके लिए एक structure है जिसमें उन्हें किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट टॉक अबाउट द ओपिनियन। फर्स्ट पॉइंट में अपना सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन बताओ।
Do you think education should be free? Yes, I strongly believe education should be free. But give the reason. जब आपने ये अपना स्टैंड दिया, आपने बताया आपका क्या थॉट है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स आई हैव सीन, आई बिलीव, टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, ये उन्हें बोलना ही बोलना है. I tried a lot to replace them, but some students वो 5.5 और 6 वाले, उनको ये एक माइंडसेट हो गया कि मैम आई स्ट्रांगली बिलीव तो बोलना ही बोलना है, आई थिंक तो बोलना ही बोलना है, आई बिलीव बोलना ही बोलना है. तो अगर आपको लगता है कि आपका हर आंसर इसी से आपको स्टार्ट करना है, प्लीज गिव दैट रीजन टू इट. उसको उसमें ऐड करो कि क्यों आपको लगता है एजुकेशन शुड बी फ्री. व्हाट इज दैट रीजन? द फर्स्ट पॉइंट शुड ऑलवेज बी दैट रीजन. आप हमेशा उस रीजन को एक्सप्लेन करोगे. अब वो रीजन क्या है? जनरली आई वॉन्ट योर आइडियाज. क्यों एजुकेशन फ्री होनी चाहिए? बिकॉज इट्स अ डिस्कशन राउंड. लेट मी नो. यस एजे, एजुकेशन क्यों फ्री होनी चाहिए? रीजन क्या है इसका? एजे, एम आई ऑडिबल टू यू? बिकॉज you are on mute. Yeah, ma'am, because this society will educated in future, it helps to enhance the knowledge. Mm-hmm. फाइनेंशियल सपोर्ट करता है. Hmm. मैम अगर किसी के पास Your words. Not able to hear you. Yes, Kushal. Yes, ma'am. Hmm. I believe that education is driven significantly in people's lives. Hmm. Firstly, education is free for who are living in remote areas. Also, it helps them to rise in the society. Not only this, they are become the good professionals in their field. It helps to feed the society, and also economic will be very strong. It happens due to the technology and education go hand in hand. It helps to people gain more knowledge easily. Not only this, free libraries and free education helps the students to hit the books every day. And for instance, government policies are bring more English medium schools in outdoor or countryside villages. It helps people to come out of the poverty and become the good knowledgeable person and sustain in this society very easily and comfortably. But Kushal, I really want you to add one idiom, because you know that you crossed the band level of 7. So to reach to 7.5 and 8, you need to keep this Ma'am, thing in practice. ma'am, I add the idiom right, ma'am. No, Go I hand missed in out. hand and it. You spoke in the Ma'am, beginning? yeah, not no, ma'am. In Hmm. I use two idioms. Hit the books Oh, with help of the technology yes, and yes. Technology. text. ठीक. Got it. Good, good, Yes. good. That's great. So sorry, I missed out. AJ? Yes, AJ. So AJ, first statement should always be the reason why. सिर्फ ये 3 चीजें भी अगर आप बोल दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि क्यों आपको लगता है एजुकेशन शुड बी फ्री. एक एग्जाम्पल दे दो उसका बस. 3 स्टेटमेंट्स आप बोलो, लेकिन इट शुड बी प्लान. कुछ भी इधर उधर का नहीं बोलना. एंड द थर्ड वन विल बी द रिजल्ट एंड इम्पैक्ट, कि इसका रिजल्ट क्या हुआ एज अ रिजल्ट. अब वो आप कनेक्टर्स के साथ बोलो, दैट्स अप टू यू, बट यू कैन रीच टू बैंड 7 अगर आप स्टक हो 6 पे, 6.5 पे. सिर्फ ये 3 चीजें बोल दो while planning your answer. How many of you are stuck on 6 and 6.5? Please raise your hands. Ma'am, it's me. Mohammed, you are able to generate ideas. Your difficulty part is something else. It's not the idea generation. I'm talking about idea generation. जिन लोगों के पास ideas नहीं आते to speak about it, कि बोलना क्या है. This is for those. Yes, ma'am. I also stuck on band 6. Hmm. I have given 2 times actual IELTS. Mm-hmm. Okay.
Yes. So you need to Kolkata. plan your answer with this. अब क्वेश्चन है, डू यू थिंक एजुकेशन शुड बी फ्री? चलो ये तो हमने बहुत बार कर लिया, बहुत सारे आंसर्स आ गए. नेक्स्ट. Now I want the students who are stuck on 6 and 6.5, please generate your ideas with this method. सबसे पहले अपना ओपिनियन जो आपको एक लाइन लगता है ना कि बोलना है, आई बिलीव, यू कैन स्पीक. बट रीजन क्या है? डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट? लगता है आपको कि क्या टेक्नोलॉजी ने लोगों के बात करने का तरीका चेंज किया है? I want to listen from Sakshi. Yes, ma'am. Give me the answer. Reason दो, एक एग्जाम्पल दो और उसका रिजल्ट बताओ कि उससे हुआ क्या है. I think technology has changes the way of people talking because technology communicate in social media, chat, calling, and use emoji and expression for the in technology. However, I also believe if technology is a way of to speaking in people. Yes, Vivek, please continue. Honestly, I don't believe that technology has changed the way people to communicate because they are still using social media. Through the help they can communicate in their daily life. For instance, many people are using technology through that they can communicate one country to another. Through that they can get knowledge and skills. That's it. Yes, ma'am. Okay. Yes, Mohammed. Mohammed, please speak now. You are on mute. Yes, Kajal, please speak. Yes, definitely. Technology has changed communication a lot because people can now connect instantly through social media, video calls, and messaging apps. It has made communication faster and more convenient, especially for people living far away. And many people now prefer online conversation. So face-to-face communication has reduced to some extent. Good. Well tried. Yes, Mauricio. Yes, ma'am. I strongly believe that technology has changed the way people communicate because communication relies on technological advances such as social networks, video conferences, and sending emails. It provides a wide range of connectivity and flexibility. For example, many people spend a lot of time surfing on social networks to different purposes, educational or to get entertainment. As a result, although technology provides more flexibility and connectivity, the lack of interaction is the drawback. That's good, Mauricio. Well spoken, well expanded also. You talked about example, you talked about the impact also, and you gave the reason also. Good.
सो रिमेंबर गाइस, सबसे पहले आपको रीजन बताना है. डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट? अब कल मैंने चेंज के लिए आपको एक वो कैब बताई थी. व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दैट वो कैब? At least try to add it for the simple words so that you can show it to the examiner that you have a variety of vocabulary. You're not using the same vocab. At least remember for part 3 these words. What was that vocab? Slower paced and less digitally driven. Yeah. Driven. And technology has evolved. Technology has transformed. जब आपको ये changed word दिख रहा है, because part 3 में mostly you will get these type of question, please add it. The sessions are conducted so that you can improve your speaking. But अगर आप उसे apply नहीं करोगे, do you think अगर आज आप session में apply नहीं कर रहे, जब आपका 15 days या 20 days बाद exam होगा, will you remember that vocab if you're not applying it here? We did the EDMs today so that you can apply it now. आज अप्लाई करोगे तभी जब 2 दिन बाद स्पीकिंग का टेस्ट होगा हियर, जब मैं मॉक टेस्ट लूंगी, ओनली देन यू कैन अप्लाई, राइट? सो प्लीज एड इट. डू यू थिंक टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट? सबसे पहले बता दो, यस, टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली इवॉल्व. टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट. रीजन क्या है इसका? Why? Because nowadays people prefer instant messaging and video calls instead of face-to-face interactions. For example, apps like WhatsApp, Zoom allow people to stay connected globally. Example khatam. As a result, communication has become faster, although sometimes less personal. Answer khatam. अगर आप इतना भी बोल के आ रहे हो, यू विल. अगर आप 6 पे हो, आप 6.5 पे डेफिनेटली रीच करोगे. आज ही ट्राई कर लेना, अभी क्लास के बाद स्पीकिंग टेस्ट देना, आंसर्स देना इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. यू विल सी अ चेंज इन योर स्कोर. बट फोकस ऑन योर फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. 6 से 6.5 जरूर आएगा, और जिनका 6.5 है वो 7 पे रीच करेंगे इफ दे आर गिविंग द आंसर लाइक दिस. Why? Example, result. कुछ नहीं समझ आ रहा, extend your ideas like this. Next question. Do you think children should use mobile phones? Yes, Sarjeet. Yes, I personally think that children should use mobile phones because uh, it gives them resources to educate themselves. As nowadays, with the help of mobile phone applications, there are various tools where they can learn about their different curricular activities. However, it should be limited with the guidance of parents and children, but there are more advantages of using mobile phone. Good. Anybody else who can plan this answer and can add idioms to it? Shah, can you unmute and speak? Yes, Rajasarai, please speak. Yes, yes, the children not be use of the cell phone because for their study purposes and for their to connect with their friends and with their family members. For example, children use a mobile phone like YouTube, baby code applications, WhatsApp, and any other social media apps to stay connected. As a result, communication may be easier for the children and also can get a more knowledge from the digital platform about their study. Yes. Who would like to answer this question with adding the idioms and advanced vocab? मैम वैसे ठीक था. हाँ, it was good. Reason दो, example दो, result explain. मैम जैसे पहले कोई जनरल लाइन भी ऐड कर सकते हैं जैसे No, मोबाइल फोन. आपको ओके मैम, हाँ, ओके. बोलो बोलो, मोबाइल फोन व्हाट? जैसे मैम मोबाइल फोन के बारे में कोई जनरल लाइन ऐड करके फिर आंसर स्टार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट ही आंसर देना है?
देखो, सबसे पहले, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड यूज मोबाइल फोन? क्या लगता है आपको? इफ यू थिंक यस दे शुड यूज, ये आप बोलो। उसके बाद वो जनरल लाइन आप क्या बोलना चाहते हो, पहले मुझे वो एग्जाम्पल दे के बताओ। जैसे मैम मोबाइल फोन plays a crucial roles in our children or in everyone's life like that. और ये वाली लाइंस जो होती है ना, ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हमने लर्न करी हुई है। इट Okay, प्लेज ma'am. अ क्रूशियल रोल इन लाइफ। आप इसकी जगह आप पता है क्या बोल सकते हो? देखो, यू आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन्स, ठीक है? मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन इज अ टेक्नोलॉजी। Yes, ma'am. तो यू कैन से टेक्नोलॉजी एंड एडुकेशन गो हैंड इन हैंड। क्योंकि अगर चिल्ड्रंस मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वो एडुकेशन के रिस्पेक्ट में अगर यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ईडीएम भी यूज कर सकते हो। Okay, ma'am. Or you can say Idiom. mobile phones can be a step in the right direction if children use them in the or use them wisely. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. No problem. Yes, Kushal, I want answer from you. Do you think children should use mobile phones? Yes, I really think that children must use excessive smartphones. It helps them to hit the books very strongly because of the technology advancement and education go hand in hand to crack any kind of exams like competitive exams. And not only this, they gain good academic scores in their school life. Also, it helps to gain more knowledge through online mode of communications, and also they can easily communicate with their teachers, easily to access more information within a just a minute time. For instance, most of the students right now using the smartphones in the right way of direction to improve their goals and reach their destinations within the time limit. गुड, बट आपने ऑल्सो यूज करा है, फिर से ट्राई टू रिप्लेस, ठीक है? एडिशनली, मोर ओवर, कोई और कनेक्टर यूज करो इंस्टेड ऑफ ऑल्सो, अदरवाइज दैट वाज गुड। Now, do you think children should use mobile phones? Yes, I believe children should use mobile phone to some extent, as technology and education go hand in hand. For example, many students they use phones for online classes or the learning apps. As a result, mobile phones can be a step in the right direction. It's your choice. You want to use one idiom, you can use, but आपको right context में idiom को use करना आना चाहिए. Yes, Vishali. Question for you is, has society become more competitive? Yes. Idiom use करना है Vishali. Without Okay. idiom, no answer. I want you to use. Okay. You want to have a look at the idioms which we Yes, ma'am. practiced yesterday. You can have a look. अच्छा, कोई suggest करेगा विशाली को which idiom she can apply? Rat race. Yes. Because it's Maybe the because the question is Mhm. about Rat society, race. competitive. Mm. Vishali, give a try. Okay. I th- like, I believe society become highly competitive nowadays because can it it makes people more rely on the perspective what people are giving in their opinion. It will become a kind of a rat race in the competition market so that people can follow the one step to the another step, as well as what people are following with their friends and family. For example, people people are more into the world where everyone can become a part of excessive workload so that they can compete with the market and make their future much brighter. It can the result can become more comprehensive in the terms of what others are following in their things that can actually hamper the thought process of the society, and it can
it can uh, significantly decrease the way society will formed before. No, Vishali. There are some corrections. Has society become more competitive? The question says you need to reply definitely. You have to speak about if you think that yes, society has become more competitive, because nowadays life feels like a rat race. People compete for better jobs, higher salaries, and academic success. For example, many students they study for longer hours to get into the top universities. As a result, competition has increased successfully or in the modern society. That's it. अगर आप देखो इतना ज्यादा बोलने से स्कोर्स नहीं मिलेगा, क्वालिटी बोलने से स्कोर मिलेगा, राइट? आंसर वो होना चाहिए जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है, नहीं तो एग्जामिनर विल नॉट लिसन टू इट. सो हैज सोसाइटी बिकम मोर कॉम्पिटिटिव? यस. कैसे बनी है वो बताओ, कि आजकल लोग क्या करते हैं. there's a competition going on ना, चाहे वो जॉब पार्ट में हो, सैलरीज के लिए हो, एकेडमिक हो, बट देयर इज अ रैट रेस गोइंग ऑन. और फिर एक एग्जाम्पल दे दो कि कैसे हो रहा है, वो एग्जाम्पल जस्टिफाई करता है, और उसके बाद आप अपना कॉन्सिक्वेंस बताओ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, Yes. in this question, I can use like this idiom. People are nowadays burn the candles of both ends to get a good job or promotion in this rat race. Yes, exactly. Many people they end up burning the candles at both ends just to stay ahead of others. Okay. Right? You can use it. Yeah, yes, ma'am. But I want you to use it always in the right context. अगर आपको तभी आई एम सेइंग कि सिर्फ 10 लर्न कर लो, इट्स गुड इनफ. इससे ज्यादा आपको लर्न करने की नीड ही नहीं है. इन 10 का आप यूज कर लोगे. 10 भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारे के सारे लगा दो. अगर आपको लगता है कि आंसर में यू कैन प्लान, जब आपको अच्छे से मीनिंग समझ आ जाता है, ओनली देन यू कैन अप्लाई इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. रॉन्ग में करा तो वो कोई फायदा नहीं है उसको यूज करने का. ठीक है? What just I used this idiom, it is in right way or Yes, you wrong way, used it ma'am? in the right way. Yes. Okay. Now I want to. Yes, Shah, can you speak now? Yes, ma'am. Do you think education system should change? Yes, ma'am. May I? Yes. Yes, I absolutely believe that education system need overhaul changes as it has been same since more than 2 centuries. It is based on the rote learning where one has to memorize some facts. But with the advancement of the technologies, as education and technologies goes hand in hand, we can check a fact or an information or theory with an instant search. So we don't need any more the memorization factor. So we need more is the practical exposure, so we can know that how a thing is done, rather the process of it, than the theory of it. On the other hand, education system needs a more digitalization where it should be the accessible to everyone, as we believe society is going towards more becoming more equitable and accessible. So education system needs digitalization heavily as it needs to reach the interior of rural areas, especially in the developing countries. Education system has also need to be more culturally centric. We need to take consider the local culture in its curriculum, as we see that local language is also a great determination of understanding something. Sorry For to suppose interrupt we you, have, Shah, but आपने बहुत बार वी यूज करा है. Why? sorry ma'am, वो can ना I try? No, you need not to speak about we. पता है जैसे आई लिसन टू द वर्ड वी ना, आगे का फ्लो, द कंसंट्रेशन सारी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि आपको नहीं यूज करना.
Limit your True. answer, but talk about only the quality of your answer. You talked Sure. about that education system should change overall, as you believe that it's been the same since centuries. The traditional learning methods are becoming outdated. The main reason is that school often focus too much on marks instead of the practical skills and creativity. For example, many students they memorize information just to pass the exam but struggle with the real life problem solving. As a result, changing the education system could be a step in the right direction for students' holistic development. Did you notice any idiom in my answer, any vocab in my answer? मैम फर्स्ट थिंग दैट वो मैं बहुत ये यूज कर रहा था वी आपने जैसे आंसर करा वो पार्ट 3 में कंप्लीटली बिल्कुल भी इसमें श्योर because V is again included with I. ठीक है? एक्चुअली में होता है क्या है कि समटाइम्स लाइक वी सी क्वेश्चन डू यू थिंक सो ये ओपिनियटेड लगता है तो वी इस So टाइप से do you चीजें think मिस्टेक हो means जाती that हैं you talked about I, but उसके बाद you are talking about the society, the people, the whole education system. So इसलिए do not talk about we. Talk about many students, education system. Talk about school. श्योर मैम ठीक है? Please work on this. नहीं तो part 3 ही band score को decrease कर देगा. Ma'am, can I try this question? Yes, Ikra. Okay. Hmm. Yes, I think the education system should evolve. In the past, education was mostly about memorizing books and sitting in the traditional classrooms. Nowadays, the world is changing fast, so I believe our education system must move with the times by teaching technology and practical skills. As a result, students will be better prepared for real world jobs instead of just passing exams. That's it? Yes, ma'am. आपका इंटोनेशन लास्ट में ऐसा क्यों लगा दैट यू वांट टू स्पीक एंड देन स्टॉप? मैम इस तरह होता है कि जैसे आइडियाज नहीं आते. तो ऐसा नहीं शो करना इकरा. ओके देखो मैम. आपका आंसर अच्छा था, आइडिया वाज ओके. डेवलप, बट फ्लुएंसी पॉज बहुत ज्यादा था. बहुत ओके रुक मैम. रुक के आंसर दिया. तो वो रुक रुक के आंसर नहीं देना, नहीं तो पॉजेस क्या है आपके, ऐसा लग रहा है हर आफ्टर एवरी 2 to 3 वर्ड्स यू टुक अ पॉज. ओके तो मैम. ऐसे रुक रुक के नहीं बोलना, फ्लुएंसी पे वर्क करना है आपने. ओके मैम, आई वर्क इट. यस, ओके. आई थैंक. विल वर्क इट. आई वर्क इट नहीं, आई विल. ओके, आई विल. Yes. Next question I want to listen from who did not got a chance yet and who really want to try. Ashlesha, can you try? Ashlesha? Yes, ma'am. Huh. Um, Is okay. practical knowledge more important than theoretical knowledge? Yes, I believe practical knowledge is more significantly important than theoretical knowledge, as the pupil gets to gain real life evidences backing up the theory the individual has learned. Other than that, it is very imperative to uh, lead a significant change in overall growth of a student's entire learning curve. Do you want to add something? I can add an example to that. For example, individuals studying in medical college, for an instance, individuals studying in medical college Yes. sorry, let me reframe the sentence. I'm so sorry. It's okay. I'm a little bit on the edge. Mhm. For an instance, students studying in medical college should have the practical knowledge regarding the concepts and procedures they get to study while in the theory classes. Basically, medical students, they needs
They need hands-on practice or hands-on training in hospitals instead of only reading the textbooks. Learning by doing is far more effective, right? Now I want to listen the same from anyone who would like to answer, please. Can I try? Yes, Can Mazu. can I try, ma'am? First, Mazu. Uh, yes, I think practical knowledge is more important in many situations because it helps people apply what they learn in real life. The reason practical knowledge is improve problem solving skill and give us real experience. As for example, a medical student need practical training in hospital, no only theoretical lesson for books. Um, as a result, people become more confident, skilled, and prepared for job and daily life. Mhm. Can you give any other example than the medical field? Anyone who can give an example, other example than the medical field? Can I try? Yes. Yes, Uh, Dalpit. yes, yes. I think practical knowledge is more important because it help people deal with in real life situation. Theoretical knowledge is useful for understanding concept, but practical experience help people get the hang of thing more easily. For example, driving a car cannot be learned only from books. As a result, people become more confident and capable in their work. दलपत जब आप people बोलते हो प्लीज उसकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करो. इट्स people. ठीक है? गुड. एग्जाम्पल वॉज गुड. आंसर भी फ्रेम्ड है. थोड़ा सा जब हम इस लेवल तक पहुंच गए तो हम उसे और एक्सपैंड करेंगे. ठीक है? तो आई थिंक practical knowledge is more crucial, more important because or as experience is the best teacher. The main reason that theoretical knowledge only provides you information, whereas practical experiences teaches people how to apply that knowledge in the real life situation. In today's fast-paced world, employers they usually prefer skilled workers who can solve problems efficiently. Then talk about your example. Example में you can give about communication and teamwork skills are usually developed through real experiences rather than any theory classes. Business owners they learn many skills only through experiences and challenges. Right? Clear? Mohammed, are you still in the session or left? Yes, Suruchi, speaking test is same for both academic and general. Okay, ma'am. Thank Sorry you. for late, ma'am. It's okay. You have a test today. I'm meeting. At what I'm time? here. Ma'am, 12:20. Oh, wish you very all the best. May you really get your scores 7 and above, which your target is. So take a deep breath, concentrate on the test now. Okay? The class is about to over. Just sit at your center, take a deep breath and give your test. Do not hesitate while speaking. Just plan your answer, give a reason. You know the structures that past and present वाला question आ जाए तो comparison जरूर करो. फ्यूचरिस्टिक आ जाए प्रिडिक्शन करके आंसर दो बिकॉज वी नेवर नो अबाउट द फ्यूचर. इट्स जस्ट यू नीड टू प्रिडिक्ट योर आंसर. तो आपको गेस करके करना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. राइट? अ प्लान्ड आंसर. And rest, if you get any question, talk about the reason, talk about example and a result, a impact, a consequence of it. That's it. पार्ट 1 अच्छे से प्लान करो. You attended the कल तो आपकी क्लास मिस हुई है idioms वाली. No, ma'am, I take it. You joined lately? Yeah, ma'am. Because I did not got any answer from you regarding idioms. Yes, ma'am. Basically, ma'am, I'm at working, so
I I don't know think that. that who is giving the answer. I remember each and everything. So I know that you did Yes, not ma'am. give any answer yesterday when it was idioms का topic. So please, if you rewatch that video, अगर आपने कल भी देखी थी, did you watch that Yes, ma'am. video? हाँ, तो Yes. please apply at least 3-4 idioms. ठीक है? Yes, ma'am. Now you can leave the session. Just keep calm and concentrate on your test. All the Okay, ma'am. best. Thanks a Bye lot. bye. No Thank you, worries. Parvati. All the best, Mohammed. Yeah, everybody, please wish him all All the the best. best, Mohammed. Ma'am, I have one doubt. Yes, Suketu. Okay, just मैम wait ये for अपने रिकॉर्डेड just wait for 1 minute. Now I Yeah. really want the students जिनका 6 पे अभी भी band score stuck हो गया है. Please apply this structure. कुछ नहीं समझ आ रहा, सिर्फ एक रीजन बता दो उस क्वेश्चन का जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि क्या रीजन है, क्यों टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए, क्यों एजुकेशन सिस्टम फ्री होना चाहिए. जस्ट 2 स्टेटमेंट्स बोलो और कुछ भी ब्ला ब्ला नहीं बोलो प्लीज. सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स बोलने के बाद एक एग्जाम्पल उसके बारे में बोलो कि कैसे वो चीज होगी. एग्जाम्पल शुड रिलेट टू दैट रीजन, दैट स्टेटमेंट जो आपने बोली है. उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ है ये आप बस, और कुछ भी मत बोलो. ट्राई द टेस्ट ऑन द एप्लीकेशन. डेफिनेटली आप जब टेस्ट इस फॉर्मेट से दोगे, ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे टू एक्सपांड योर आइडियाज, आपको अपने स्कोर में इंक्रीमेंट दिखेगा. ठीक है? यस प्लीज. Now I want an honest feedback from you all. Did you find this session helpful? Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. but Right now I please, am on वो cloud अगर 9. बच्चे Kushal is on cloud 9. That's great. Yes, ma'am. But please use the vocab and the idioms. तभी मैंने आपको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं कराया idioms में. I really want you to use it. ठीक है? ट्राई टू यूज इट. अभी से करना स्टार्ट करोगे तभी ऑन द एग्जाम डे यू विल यूज इट इन द राइट वे. नहीं करोगे, सेशन खत्म हुआ, क्या कराया, नहीं, ऐसे स्कोर नहीं आता कभी भी. सो प्लीज प्रैक्टिस. ठीक है? ओवर यूज मैडम, नहीं करना, नेचुरल यूज करना. ईडीएम को एक ही बार यूज कर सकते हैं? यस यू कैन. एक एक बार यूज करो. 2 बार करना है तो आप 2 बार भी कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट, बट राइट कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए. ओके मैम. ओके. यस सुकेतु, व्हाट्स योर डाउट? प्लीज लेट मी नो. मैम ये रिकॉर्डेड सेशन कहाँ पे होते हैं अपने वो आप बताते हो वहां पे ही होते हैं बाकी के क्लासेस एप्लीकेशन में जाओ आप. क्लासेस का सेक्शन है. क्लासेस के सेक्शन में आपको आइल्स क्लासेस, लाइव क्लासेस दिखेंगी. वहां पर आप स्पीकिंग खोलोगे तो स्पीकिंग में सारी क्लासेस है. और या फिर आप YouTube में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. 16 अप्रैल बैच, 3rd बैच है ये, उसमें भी आप सारी क्लासेस चेक कर सकते हो. कुछ वीडियो में एआई वॉइस है मैम. AI वॉइस है? हाँ, जल्दी हाँ मैम सही बोल रहा है वो, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ. ऐसा एआई वॉइस है. अच्छा, पता नहीं मैम. ऐसा कुछ हो तो प्लीज लेट मी नो एवरीडे कि कौन से वाले सेशन में ऐसा हुआ है. आई विल चेंज इट. दिखाओ अगर कोई हमको है. मूव कर दोगे ऐसा हो दादा? कौन से वाले सेशन में ऐसा हुआ है? पहले ही सेशन में, चैप्टर पहले ही. उस क्लास का नेम क्या है? व्हाट्स द टाइटल ऑफ दैट क्लास? यस सरजीत, व्हाट्स योर क्वेरी? Yes, I have a question. Whenever I try to speak, like I know the ideas and everything, but totally get blank. And then whenever I'm speaking, I just speak whatever I wanted to, even though I know that I am doing grammatical mistakes and everything. And I wanted to use idioms, but I don't know how to control my speak and then, properly deliver the ideas. Try to practice with one statement. Now, suppose you have one question: how has technology changed the way people communicate? Only think about reason, और कुछ बोलना ही नहीं है. प्लान करो आंसर को, Okay. सिर्फ रीजन बोलो. टेक अ पॉज, रुक जाओ, कुछ भी मत बोलो. आपने रीजन बोला, उसके लिए आप 30 सेकेंड्स का पॉज ले लो. 30 सेकेंड्स के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बोलो. देन टेक अ 30 Okay. सेकेंड का पॉज, फिर आप अपने आंसर का रिजल्ट बोलो. इससे आपकी स्ट्रैटेजी प्लान होगी. इस प्रैक्टिस को फिर आप रिड्यूस करो कि मुझे पॉज नहीं लेना 30 सेकेंड्स का.
ठीक है, Okay. ट्राई दिस टेक्निक। जब हम प्लान करते हैं अपने आंसर को तो हम इसी वे में प्लान करते हैं, ठीक है। इसीलिए Okay. जब मैं सेशंस में कराती हूँ तो मैं सबसे पहले आपको क्या बोलती हूँ कि आप सिर्फ रीजन बताओ, एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बताओ, एंड द थर्ड स्टूडेंट विल ओनली टॉक अबाउट रिजल्ट, देन यू विल Okay. कम। जब आप पूरा आंसर बोलने लग जाते हो ना, तब आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि बोलना क्या था, बोल क्या दिया, यूज ये क्यों नहीं करा, वो कैप तो मेरे पास थी लेकिन मैंने ऐड नहीं करे। ठीक है, तो ट्राई Yes, दिस yes. टेक्निक कि सिर्फ रीजन बोलना, देन टेक अ लॉन्ग पॉज, फिर एग्जाम्पल बोलो, टेक अ लॉन्ग पॉज, और इस टाइम को रिड्यूस करो विद प्रैक्टिस। ठीक है। Yeah. So when I'm trying to practice from that AI thingy, so like that gives that emojis, right? I don't know like whether how much mistakes we are doing. So part one and part through like it's good, but part two, it always shows that like it is not related to question. हाँ, I dropped this query to the team. They are working on it. अभी आई गेस 2 days पहले भी मुझे किसी ने बोला था द सेम थिंग कि क्यू कार्ड में ये फीडबैक आ रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा आता है, जस्ट सबमिट टू द सपोर्ट सेक्शन। Okay. I have already forwarded this concern to the team. Soon Okay, it will thank be you. get rectified. Yes, Yeah. Sakshi, what's your query? मैम मेरी क्वेरी भी अभी स्टूडेंट ने बोला ना वैसे है, मतलब मैं मुझे आता तो है पर जब मैं स्पीकिंग करने जाती हूँ तो मैं सब ब्लैंक हो जाती हूँ तो साक्षी बोलने ये में। टेक्निक अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि आप बोलते बोलते कहीं गुम हो जाते हो कि मैंने बोला क्या क्या बोल दिया, ट्राई दिस टेक्निक। क्वेश्चन को रीड करो, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर प्लान करो कि ओनली रीजन बताना है कि क्या ये रीजन है उसका। लॉन्ग पॉज दो, एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल के बाद फिर उसका रिजल्ट बोलो। चेक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, ठीक है, और फिर चेंज देखना। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर आंसर। उससे आपको प्लानिंग की एक स्ट्रैटेजी पता लग जाएगी कि मुझे आंसर को डेवलप कैसे करना है, आइडियाज कैसे डेवलप करने हैं, और फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में कैसे काम करना है। जब हम ऐसे प्लान करके आंसर कर देते हैं ना, तो हमारा जो कोहेरेंस है उसमें स्कोर कभी भी रिड्यूस नहीं होता, बिकॉज आपका लॉजिकल फ्लो चल रहा है आइडियाज का। ठीक है। मैम ये सिर्फ पार्ट 3 में अप्लीकेबल है कि नो, मतलब फॉर एवरी अगर पार्ट आपको 1 लगता है कि पार्ट पार्ट 1 2 में भी आप नहीं आंसर बोल पाते, यू गेट कंफ्यूज, तो आप पार्ट 1 भी ऐसे प्रैक्टिस करो। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं, कुछ हाँ, क्वेश्चन बट कुछ मतलब क्वेश्चंस stuck हो अब जाते आपको हैं। एग्जाम में तो नहीं पता ना कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, एनी टॉपिक कैन कम, सो आपके पास वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू गिव द आंसर। ओके Ma'am, I have a question. यस रुखसाना। We should practice all three parts, or we should practice one by one. First, we देखो should practice for part one. देखो अगर यू बिलीव कि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब स्ट्रांग है, तब तो आप एंटायर टेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि नो आई एम नॉट स्ट्रांग ना, अभी मेरा वो स्कोर नहीं आ रहा, तो अभी आप पार्ट 1 की पहले प्रैक्टिस करो। जैसे हमने फुल वीक पार्ट 1 करा था, देन हमने पार्ट 2 करा, फिर हमने अब पार्ट 3 करा। द सेम वे यू हैव टू डू। पहले अपने डिफरेंट पार्ट्स को स्ट्रॉन्गर करो, फिर एंटायर स्पीकिंग का मॉक टेस्ट दो। ठीक है। Ma'am, same with other modules like reading, यस listening. डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सीधा आइल्स की बात आई, चलो राइटिंग का मॉक टेस्ट कर लेते हैं, रीडिंग का मॉक टेस्ट कर लेते हैं, ऐसे कभी स्कोर नहीं आता। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, पेपर फॉर्मेट नहीं पता, आप कैसे करोगे। लिसनिंग में स्टूडेंट्स को ये नहीं पता सेक्शन 1 में ऑडियो कौन सी होती है, बस लिसनिंग के टेस्ट करना स्टार्ट कर देते, ऐसे कभी भी स्कोर नहीं आएगा लॉन्ग रन में, तो कभी भी। ठीक है, पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट करो। ओके, वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइटिंग मॉड्यूल। जैसे ही हमारा स्पीकिंग इज अबाउट टू कंप्लीट इन फ्यू डेज, आई गेस विद द नेक्स्ट वीक वी विल बिगिन विद द राइटिंग पार्ट। ओके, यस साक्षी बोलो। मैम मेरी ग्रामर भी इम्प्रूव मुझे हो नहीं रही है, वो थोड़ा सा कैसे करें। देखो ऐसी कोई भी मैं चीज है जो हो, वीडियो में तो देख चुकी हूँ, जब मतलब तक पूरा लर्न सिर्फ वगैरह। देखने से नहीं होता, अप्लाई करने से होता है। स्पीकिंग कम्स विद प्रैक्टिस।
सो ये कोई भी मत बोला करो कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा नहीं, आप कर नहीं रहे हो तभी नहीं हो रहा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर होगा। अगर आप ये मतलब वीडियो बोलोगे कि वगैरह देख रही हूँ, लिख रही हूँ, बट मतलब जब लिखना स्पीक कर क्यों रही हूँ है, तब स्पीकिंग है, स्पीक करना है, लिखना कुछ नहीं है, राइट नहीं करना। स्पीक। ये स्पीकिंग के क्वेश्चंस भी मैं इसलिए आप लोगों के लिए लिखती हूँ सो दैट यू कैन रीड। अदरवाइज एग्जामिनर कोई आपको क्वेश्चन लिख के देगा स्पीकिंग में, ही विल नहीं ओनली नहीं, स्पीक। क्यू सो दैट कार्ड। जब आप सेशन को रीवॉच करो आपको वो क्वेश्चंस याद रहे कि हमने प्रैक्टिस क्या करे थे, हमने आंसर प्लान कैसे करा था। यस विशाली। यस मैम, थैंक यू। नो वरीज। यस मैम। लाइक मैम, आई वांटेड टू आस्क कि मतलब मैं कब स्पीकिंग टेस्ट बुक करूं सो दैट यू कैन मैं। ट्राई इट एनी टाइम नाउ विशाली, अब तो आप ओके। कर सकते हो स्पीकिंग टेस्ट यस बुक। मैम। आजकल में आप क्या करो, अपना स्पीकिंग का एआई पे टेस्ट दो, चेक योर ओके। स्कोर क्या आ रहा है। देन इन द नेक्स्ट वीक, बिकॉज कल तो वैसे ही फ्राइडे है, आई ओके। हैव आई गेस 2-3 टेस्ट टुडे ऑल्सो एंड टुमारो ऑल्सो। मंडे ट्यूसडे में या वेंसडे में जब आपको लगता है कि वीकेंड में आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, तब आप एग्जामिनर के साथ स्पीकिंग टेस्ट करो। यस And I really want the students who are learning from me and they are attending the classes, I really want to take the test मैम। यस मैम। and give them an entire feedback for that. ओके। Okay? ओके। Yes, Anam? सो थैंक यू मैम। मैम, जो आपसे ये पूछना था कि लाइक जब टेस्ट करने लगते हैं ना लिसनिंग में, मैं मोबाइल में स्क्रॉल डाउन हो जाता है लिसनिंग वाला टेस्ट, लेकिन जब लैपटॉप में करते हैं तो टूल बार ना होने की वजह से वो बहुत मुश्किल होती है उसको स्क्रॉल डाउन करने में ना। क्यों तो मैं ऐसा ये पूछ प्रॉब्लम? वेब वर्जन में मैम, तो नहीं आता। मे बी मैम मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पर मैम, जब मैं लैपटॉप पे टेस्ट करती हूँ ना वो स्क्रॉल डाउन नहीं होता, साइड पे टूल बार आती ही नहीं है, जिसकी वजह से मैम जब ऐसा यहाँ सबके साथ है या सिर्फ आपके साथ? आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैम मैं क्योंकि आपसे जब पहले भी। हमने भी स्पीकिंग जी। लिसनिंग टेस्ट करा है, जब लिसनिंग की मोबाइल से क्लासेस, मैम, मोबाइल से तो हम इजीली स्क्रॉल डाउन कर बट लेते हैं, मैंने तो लेकिन आपको वेब वर्जन में ही करके दिखाया ना जी लिसनिंग का जी वो टेस्ट। मैं यही आपसे पूछना चाह रही आप थी ना, अपडेट मैं कर काफी। लेना, कुछ आपका सिस्टम अपडेट ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, मे बी मैम बिकॉज ऐसा। अगर किसी और मतलब लाइक किसी भी मतलब सेपरेट वो ऐप से अगर ट्राई करती हूँ ना तो वो हो जाता है, लेकिन जब मैं बेबी कोर्स से लिसनिंग का टेस्ट ट्राई आप करती हूँ ऐसा वो से करना, स्क्रॉल डाउन नहीं होता कल है। आप ना अपने वेब वर्जन से लॉग इन करना, ठीक है, क्लास भी उसी से ओके मैम। लेना अपने सिस्टम से, एंड देन स्क्रीन शेयर करना, ठीक है। जी ओके मैम, ओके, थैंक यू नो सो मच मैम। प्रॉब्लम। यस राजा प्लीज। मैम मैंने पूछना था जो ये स्पीकिंग की पहले वीडियो। मुझे बताओ, व्हाट्स योर रियल नेम? इज दिस योर रियल नेम? हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? मैम नहीं, मेरे ब्रदर ने आईडी बनाई थी तो उसने दैट्स अपने व्हाई नाम। आई गेट कंफ्यूज, नेम राजा लिखा है और पीछे तो रानी है। यस, तो व्हाट्स योर रियल नेम? मैम शहनाज। शहनाज, ठीक है, गॉट इट। बोलो क्या डाउट है आपका? मैम मैंने पूछना था जो स्पीकिंग की ये वीडियो अपलोड हुई है आइल्स क्लासेस लाइव में, ये मतलब कि नई वाली है या पुराने वाले सेशन है ये सभी? नहीं, अभी जो आइल्स की क्लासेस जो एप्लीकेशन में दी हैं वो सारी न्यू है। देखो एक एक क्लास उसमें से रिमूव होती जाएगी, जैसे न्यू सेशन आएगा उसमें अपलोड होगा। अभी राइटिंग की सारी क्लासेस पुराने बैच की हैं, रीडिंग की पुराने बैच की हैं, लिसनिंग की पुराने बैच की है, स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है तो स्पीकिंग की अपडेट होती जा रही है, ठीक है। व्हाट आई डू इज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम जैसे मैं देख रही थी, जैसे ये रीडिंग वाली मतलब कि ये है, इसमें 8 9 10 10th के बाद सीधा 20th चैप्टर। 10th के बाद 20th कैसे? वेट, आई विल शो यू, ओके। वेट। Anyone who can share the screen? Is it possible? Baby code Finish. application. Anyone who can open the application and share the screen, even through phone, no problem. Kushal, can you do? Thank you so much, Vishali. Bye. Take care. Now go to the application. Yes. Just minimize my screen. Yes. Now see here, guys. जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ये लाइव क्लासेस दिख रही हैं आपको? लाइव क्लासेस इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है क्लासेस, यस मैम, यस तो यस आप इस मैम। पे क्लिक करो।
जिसे कुशल ड्रैग कर रहा है लेफ्ट एंड राइट, दीज आर द अपकमिंग क्लासेस। ये अपकमिंग क्लासेस है, ठीक है, जो आपकी अब होने वाली है। ऊपर लिखा है ना अपकमिंग लाइव क्लासेस, सो ये आपकी आने वाली क्लासेस है। You want, sorry, Kushal, scroll down. I'm calling my son's name Yovan because I have a habit of calling Yovan. Yes. Live classes. ये लाइव क्लासेस दिख रहा है आपको कॉर्नर पे बिल्कुल? Yes, ma'am. स्क्रॉल डाउन, आइल्स क्लासेस लिखा है, आइल्स क्लासेस पे क्लिक करो। आइल्स क्लासेस पे क्लिक करने के बाद सी ऑल द क्लासेस, ये सारी न्यू क्लासेस है जो अभी हो चुकी है। These are all new classes जो अभी हमने करी हैं, and these are till I guess chapter 15, 16, 17. आज हमने ये 17th क्लास करी है, हाउ टू एक्सटेंड आंसर्स। ये अभी अपलोड हो जाएगी, अभी आपको ये पुरानी क्लास दिखेंगी, कॉलोकेशंस भी, मॉक टेस्ट भी, ये लास्ट कोर्स की है। बट जैसे जैसे क्लासेस आपकी यहाँ पर कंडक्ट होंगी वो वहां पर अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। मैम रीडिंग वाला सेक्शन। हाँ, रीडिंग, व्हाट रीडिंग? रीडिंग में देखो ये राइटिंग की भी सारी लास्ट कोर्स की क्लासेस हैं, अपलोड होती जाएंगी जैसे जैसे आपकी न्यू क्लास होगी। ओके, सो अगर आपको पुराना कोर्स कभी भी देखना हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। यू कैन स्टॉप योर शेयर स्क्रीन, कुशल। यस, so please practice from the application so that you can always check your score. Once you evaluated that your scores are consistent 6, 6.5 or 7, then try to plan for the entire speaking test with an examiner. ठीक है, अगर आपका एग्जाम नियर बाय है, ट्राई द बेबी कोड वीजा सर्विसेज, दे विल हेल्प यू आउट। कोई भी डाउट है, आपका क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कंट्री कौन सी प्लान करनी है, दे विल सजेस्ट यू ईच एंड एवरीथिंग। Do not forget to click on the remind me button for all of the new classes so that you know कि आगे क्या होने वाला है and you can plan it. Share the application with your friends, your family, whoever want to give IELTS and they really want to practice like you. The way you achieved your score, they can also improve their scores, right? Okay then, see you all tomorrow. Bye bye, take care. Bye bye, ma'am. Take